नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। PYQs की सीरीज़ में एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एंड ट्रस्ट मी, दीज वीडियोस आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज PYQs के साथ साथ हम उन सभी PYQs की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, और जो RPSC कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम 2016 था उसका ये क्वेश्चन 76 है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज अ लाइन फ्रॉम वॉल्ट विटमन्स। तो देखिए ये एक लाइन दी गई है और पॉइंट का नाम भी बताया गया है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पोम से ये जो लाइन है वो ली गई है। ऑप्शंस वी हैव वन सेल्फ आई सिंग, आई हियर अमेरिका सिंगिंग, अ पैसेज टू इंडिया एंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सो राइट आंसर जो है वो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Song of Myself is a poem by Walt Whitman. He was born in 1819 and he was died in 1892. That is included in his book Leaves of Grass. ये इनका एक poetry collection है. It has been credited as representing the core of Walt Whitman's poetic vision, और Walt Whitman को the representative poet of American poetry भी कहा जाता है. The poem was divided into 52 numbered sections for the fourth that came in 1867 edition and finally took the title Song of Myself in the last edition that came in 1891 and 92, and that is also called the deathbed edition because 92 में जो वॉल्ट विटमैन है उनकी डेथ हो गई थी. The number of section is generally throughout to mirror the number of weeks in the year. ये थी सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ की एक्सप्लेनेशन. और नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि लीव्स ऑफ ग्रास जो है इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं. लीव्स ऑफ ग्रास इज अ पोइट्री कलेक्शन बाय अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन, दो इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855. तो देखिए पहली बार ये पब्लिश हुई थी 1855 में. एंड वॉल्ट विटमैन स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल लाइफ राइटिंग, rewriting and expanding Leaves of Grass until his death in 1892, and that is called Deathbed Edition. The first edition was a small book of 12 poems and the last was a compilation of over 400. तो देखिए 1855 में जब ये एडिशन पहली बार पब्लिश हुआ था तो इसमें सिर्फ 12 पोइम्स थी, और बाद में जब ये लास्ट एडिशन इसका आया 1892 में, उस समय इसमें लगभग 400 पोइम्स थी. नेक्स्ट है आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ पोम बाय द अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन, फर्स्ट पब्लिश्ड इन द 1860 एडिशन ऑफ द बुक लीव्स ऑफ ग्रास. तो ये भी लीव्स ऑफ ग्रास में से ली गई है. दो द पोइम वॉज रिटन ऑन द ईव ऑफ सिविल वॉर बट इट रिप्रेजेंट्स द विजन ऑफ अमेरिका एज अ हार्मोनियस कम्युनिटी. Next है Once Self I Sing is a poem by Walt Whitman and it was also published in Leaves of Grass in 1867th edition. Next है Passage to India is a poetry collection published by Walt Whitman in 1871. ये बहुत important है. The first edition was 120 pages long and held 74 poems. The poetry collection's title poem, A Passage to India, was Whitman's last major poem. Whitman wrote it in 1869 after the Suez Canal was first opened. E.M. Foster titled his 1924 novel A Passage to India after the poem. तो देखिए वॉल्ट विटमैन ने 1871 में ये पोइट्री कलेक्शन जो है वो इनका पब्लिश हुआ था. इसमें ये लास्ट फॉर्म है. और E.M. फॉस्टर का जो एक नॉवल है अ पैसेज टू इंडिया वो 1924 में पब्लिश हुआ था और इसी से E.M. फॉस्टर ने टाइटल लिया है. Next question. It's when I'm weary of consideration, I would like to get away from earth a while and then come back to it and begin over. These lines are from Robert Frost's poem. तो देखिए इसमें भी पोइट का नाम दिया है, लाइन दी है पोम की, और ये पूछा गया है कि किस पोम से ये जो है जो लाइन्स है वो ली गई हैं. तो देखिए इससे एक बात तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है कि पोम्स जो हैं उनका टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जो फेमस पोइट है उनका तो बिल्कुल. तो ऑप्शंस हमारे पास हैं बर्चेस, आफ्टर एप्पल पिकिंग, टू ट्रैम्प्स एट मड टाइम एंड मेंडिंग वॉल्स. राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 बर्चेस. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Birches is a poem by American poet Robert Frost, first published in 1915
together with the road not taken and the sound of trees as a group of poems. It was included in Frost's थर्ड कलेक्शन ऑफ पोइट्री माउंटेन इंटरवल। तो देखिए थर्ड कलेक्शन ऑफ पोइट्री जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आया था 1916 में और नाम था उसका माउंटेन इंटरवल। उसमें ये जो पोम है बर्चेस ये पब्लिश हुई थी। कंसिस्टिंग ऑफ 59 लाइन्स, it is one of Robert Frost's most anthologized poems, along with other poems that deals with rural landscape and wildlife. It shows Frost as a nature poet. Next poem है After Apple Picking, is a poem by American poet Robert Frost. It was published in 1914 in North of Boston. Frost's second poetry collection. तो देखिए ये जो North of Boston है ये 1914 में publish हुआ था और ये Robert Frost का second poetry collection है. The poem 42 lines in length, does not strictly follow a particular form nor does it follow a standard rhyme scheme. तो 42 lines की ये poem है. 1914 में जो नॉर्थ ऑफ बोस्टन नाम से इनका पोइट्री कलेक्शन आया था, सेकेंड पोइट्री कलेक्शन था, उसमें ये पोम पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं अब द पोम डिस्क्राइब, ये इसी के बारे में है। द पोम डिस्क्राइब अ पेस्टोरल सीन ऑफ न्यू इंग्लैंड लाइफ इन ऑटम। तो देखिए ऑटम सीजन जो है उसका डिस्क्रिप्शन है। द नरेटर इज रिकॉलिंग द डे spent picking apples on a ladder. Throughout the poem, the narrator expresses a desire for rest, using phrases such as I'm drowsing off and I'm overtired. तो I'm drowsing off, I'm overtired जैसी phrases का जो use है वो narrator ने किया है। And he has a desire for rest. Next है Two Tramps in Mud Time by Robert Frost is one of the best known poems of a further range. तो ये भी एक वॉल्यूम ऑफ पोम्स है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1936. What strikes us about the poem is that the poem is a radiant evidence of Frost's visual imagination coupled with psychological insight into human beings. The poem is a dialectic between poet's evocation and vocation. Next है Mending Wall, ये भी बहुत important poem है. Is a poem by the 20th century American poet Robert Frost, and he was born in 1874 and he was died in 1963. It opens Robert's second collection of poetry, North of Boston, and earlier we have seen it that it was published in 1914 by David Natt, and it has become one of the most anthologized and analyzed poems in modern literature. तो ये थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवेज फॉर हुम द बेल टोल्स टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम। तो देखिए अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक नॉवल है फ्रॉम फॉर हुम द बेल टोल्स, इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हमारे पास हैं जॉन डन्स डिवोशन अपॉन एमर्जेंट ओकेजन्स मेडिटेशन 17, 1558 talk by George Peele, a verse in the Bible, or a speech by US War Confederate Thomas J. Jackson. Right answer will be John Donne's Devotion upon Emergent Occasions, Meditation 17. Explanation देखते हैं. From Whom the Bell Tolls is a novel by Ernest Hemingway published in 1940. It tells the story of Robert Jordan, a young American volunteer attached to a Republican guerrilla unit during the Spanish Civil War. As a dynamiter, he is assigned to blow up a bridge during an attack on the city of Segovia. तो ये था इस नॉवल के बारे में। प्रोटैगनिस्ट जो है वो रॉबर्ट जॉर्डन है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1940. और देखते हैं इसके बारे में। द बुक्स टाइटल जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है इज टेकन फ्रॉम द मेटाफिजिकल पोइट्स जॉन डन्स series of meditation and prayers on health, pain and sickness, published in 1624 as devotions upon emergent occasions, specifically meditation 17. Hemingway quotes the part of the meditation using Donne's original spelling. In the book's epigraph, Donne refers to the practice of funeral tolling universal in his time. तो ये था इसके टाइटल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन स्टेनबैक्स ग्रेप्स ऑफ रेथ is a novel set in the Great Depression is about। तो देखिए जॉन स्टेनबैक से ये क्वेश्चन है, उनका जो नॉवल है द ग्रेप्स ऑफ रेथ उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस बारे में है ये बेसिकली पूछा गया है। ऑप्शंस हैं हमारे पास द एंगर ऑफ गॉड एट मैन्स डिसोबीडियंस, अ बैंक रॉबरी एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट्स,
Oklahoma farmers driven from home in search of jobs, or Californian grape flower facing a water crisis. राइट आंसर हो जाएगा Oklahoma farmers driven from home in search of jobs. अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं. The Grapes of Wrath is an American realist novel by John Steinbeck and published in 1939. The book won the National Book Award and Pulitzer Award for Fiction, and it was cited prominently when Steinbeck was awarded the Nobel Prize in 1962. तो देखिए एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो जानने को मिलते हैं. ये जो जॉन स्टेनबेक का नॉवल है द ग्रेप्स ऑफ डेथ, इसके बारे में जानने के साथ साथ हमें इनको नोबेल प्राइज़ जो है वो कब दिया गया था, 1962 में, ये भी हमें जानने को मिला है. Set during the Great Depression, the novel focuses on the Georges, a poor family of tenant farmers driven from their Oklahoma home by drought, economic hardship, agricultural industry changes, and bank foreclosures, forcing tenant farmers out of work. तो ये सब जो नॉवल है ये इस बारे में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Hairy Ape by Eugene O'Neill can be categorized as an or a dash play. तो किस तरह का ये प्ले है ये पूछा गया है. ऑप्शंस हैं एक्सप्रेशनिस्ट, सिम्बॉलिस्ट, एब्सर्डिस्ट और रियलिस्टिक. सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एक्सप्रेशनिस्ट. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. The Hairy Ape is 1922, the same year when T.S. Eliot's Wasteland was published. It is an expressionist play by American playwright Eugene O'Neill. It is about a beastly, unthinking laborer known as Yank, the protagonist of the play. तो Yank जो है वो play का protagonist है, as he searches for a sense of belonging in the world controlled by the rich. At first, Yank feels secure as he stalks the engines of an ocean liner and is highly confident in his physical power over the ship's engine and his men. So this was all about today's video. Thank you very much for watching this video. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe this channel and press the bell icon too, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. I'll try to cover जो जितने rpsc के जितने भी पेपर हैं, मतलब 2 अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिसेंटली ईयर्स में हुए हैं उनको मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले कवर करवा दूँ, ताकि इनसे जो एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं उनसे ही क्वेश्चन जो हैं वो ऑलमोस्ट बनते हैं. एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.